इस लेक्चर में हम बेसिकली एक कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने ब्रेक डाउन करना है उस कॉम्प्रीहेंशन को और हमने अंडरस्टैंड करना है कि जवाब उसके किस तरीके से देने हैं। ठीक हो गया। अब ये आई एम नॉट श्योर ये किस एरा का है, किस आप कह लो साल का है, मुझे ये नहीं याद, लेकिन ये रिसेंट ईयर्स में से किसी आपके पेपर का ही पैसेज है। The reason why I always take examples from your exams, from your exam papers is because I want you to be not get scared कि अच्छा मैडम ये पढ़ा रही हैं बट शायद पेपर का सवाल बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, तो उनको वो तो पढ़ा नहीं थी, तो फिर आप लगातार प्रेसिज चेक करवा रहे हो, काम कर रहे हो उसके ऊपर। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं आपके अपने पास पेपर से ही सवाल आपकी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ प्रेसिज लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। एंड आई हैव डन दिस फॉर एवरी पोर्शन ऑफ योर कॉम्पोजिशन पेपर कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसलेशन है, एनीथिंग, मैंने उसकी सारी जो एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स करवानी है वो आपके पास्ट पेपर से करवानी है ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The civilization of China, as everyone knows, is based upon the teaching of Confucius, who flourished 500 years before Christ. Like the Greeks and Romans, he did not think of human society as naturally progressive. On the contrary, he believed that in remote antiquity, rulers had been wise and the people had been happy to a degree which the degenerate present could admire but hardly achieve. ठीक है, वो एक आइडियोलॉजी की भी फिलहाल बात कर रहे हैं, कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी की, जिसको वो बाद में एक्सप्लेन भी करता है और वो थोड़ी सी ये बात भी करता है कि ह्यूमन सोसाइटी को वो नहीं सोचता एज बीइंग नेचुरली प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग थी वो it was based on the fact human society is not progressive, और वो ये कहता था कि remote rulers had been wise और लोग जो थे तब they had been happy, जो कि अब प्रेजेंट में लोग नहीं अचीव कर सकते। This of course was a delusion. ठीक है, ये जो था एक delusion था, but the practical result was that Confucius, like other teachers of antiquity, aimed at creating a stable society. So basically वो कहना ये चाह रहा है कि Confucius was aiming to reach a stability in the society, maintaining a certain level of excellence, कि maintain करे एक particular level of excellence in the society, but not always striving after new successes. लेकिन new successes के पीछे वो नहीं भागता। In this, he was more successful than any other men who ever lived. His personality has been stamped on Chinese civilization from his day to our own. During his lifetime, the Chinese occupied only a small part of present-day China and were divided into a number of varying states. ठीक है? आगे वो कहता है कि during the next 300 years, they established themselves throughout what is now China proper and founded an empire exceeding in territory and population any other that existed until the last 50 years. ठीक है, कि बेसिकली चाइना जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा ड्यूरिंग हिज टाइम। आगे वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स, Mongol and Manchu dynasties, and occasional longer or shorter periods of chaos and civil war, the Confucian system survived. किस Confucian system ने ये चीज़ें सर्वाइव की है, Mongol dynasties, वॉर हो गया, chaos हो गया, सब कुछ सर्वाइव किया, bringing with it art and literature and a civilized way of life. It was focused on a civilized way of life. A system which has had this extraordinary power of survival must have had great merits and certainly respects our respect and consideration. अब वो तारीफ कर रहे हैं कि जी अगर एक सिस्टम इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सर्वाइवल लेके आ रहा है और इतने मेरिट्स हैं उसके, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व करता है। वो एक रिलीजन नहीं है as we understand, because वो रिलीजन क्यों नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएटेड नहीं है किसी सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस या मिस्टिकल बिलीफ्स के साथ। अब रिलीजन जो होता है वो हमेशा आप मतलब ऑब्वियसली we don't see it, we as Muslims don't see it that way, लेकिन नॉर्मली जिस तरह आउटसाइडर्स देखते हैं या आप कह लो और रिलीजन देखते हैं, या जैसा पैसेज में बात हो रही है, they view it as something, they view religion as a belief in supernatural, because a lot of the things that we cannot see, we just believe in it. एक belief system है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब वो कहता है कि कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजी थी, जो कन्फ्यूशन सिस्टम था, वो एक रिलीजियस बिलीफ नहीं था, बिकॉज वो किसी मिस्टिकल पावर्स के ऊपर बिलीव नहीं करता था। इट वॉज अ प्योरली एथिकल सिस्टम, लेकिन बट इट्स एथिक्स अनलाइक दोज ऑफ क्रिश्चियनिटी आर नॉट टू एक्सॉल्टेड फॉर ऑर्डिनरी मैन टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस क्या टीच करता था, which was something like very old-fashioned ideal of a gentleman as it existed in the 18th century. ठीक है, और इसकी एक sayings भी थी,
एक saying थी, वो क्या कहती थी कि the true gentleman is never contentious. He courteously salutes his opponents before taking up his position. तो काफी gentleman type उसकी teachings होती थी, कह लो proposing और encouraging gentleman type behavior, so that even when competing he remains a true gentleman. So वो कहता है कि इतना कोई you had to be a true gentleman even when facing your opponents and even when confronting your opponents, ठीक है, or even when competing with them. So this is your entire passage about Confucius ideology. अब आप सवाल देखो तो सवाल कहता है कि जी why do you think the author calls Confucius' belief about the progress of human society as a delusion? अगला सवाल, how did Confucius' thought affect China to develop into a stable and a proper China? ठीक है, why does the author think that the Confucian system deserves respect and admiration? Why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? ये तो अभी बात हुई है. Briefly argue whether you disagree or agree to Confucius' ideal of a gentleman. ये जो सवाल है ये मैं नहीं कराऊंगी. क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग के ऊपर है, इसका कोई करेक्ट जवाब नहीं है, इसका जवाब सिर्फ आप खुद लिखोगे. ठीक हो गया? So this is the question I was talking to you about when I was discussing the rules of the comprehension. कि काफी ऐसे सवालात, कभी-कभी हमेशा एक सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें they always talk about, they always want your opinion rather than having one correct answer. They're always going to have different answers or different versions and they're going to accept it based on what you think about a particular situation. ठीक है? पहला सवाल, why do you think the author calls Confucius' belief as a delusion of the progress of human society? शुरू में ही देखो, he did not think of human society as naturally progressive because he believed that rulers had been wise. In remote antiquity, rulers had been wise and the people had been happy to a degree which the degenerate present could admire but hardly achieve. This was a delusion. जवाब क्या है? The author believes that Confucius believes as delusions because of his estimation of human society being non-progressive. Because उसको लगता था कि human society naturally is non-progressive और वो achieve level of antiquity कर ही नहीं, level of happiness कर ही नहीं सकती जो कि पास ने किया था. Or another reason about the author's belief can be Confucius' claim about the ancient rulers being wise. अब ये बहुत ज़्यादा concise है, brief है और बता भी दिया है कि passage के अंदर क्या लिखा होता है in my own words. अगला, how did Confucius' thought affect China to develop into a stable and a proper China? Confucius' thoughts affected China to develop into a stable country by aiming for the formation of a stable society. यहाँ पे लिखा हुआ है उसने that he aimed to create a stable society maintaining a certain level of excellence but not striving after new successes. A certain level of excellence was always called for in Confucius' teachings and this helped China survive through adverse times. ये आपका जवाब होगा. अगला सवाल, why does the author think that Confucian system deserves respect and admiration? Look for the keywords in the passage. कहाँ पे लिखा हुआ respect and admiration? We had read it. मुझे अब याद आ रहा है पढ़ के आपके साथ कि ये देखो ये आ गया लफ्ज़ आपका. तो कहना क्या चाह रहा है कि because Confucian system ने survive की dynasties, civil war, chaos survive किया और it brought with it art and literature and a civilized way of life. A system which had this extraordinary power of survival must have great merits और इसीलिए it deserves our respect and consideration. ठीक हो गया? इसलिए वो deserve भी करता है. अगला सवाल, इसका जवाब देख लेते हैं कि it deserves respect and admiration because not only has it survived various invasions and wars, but it has also nurtured a civilized way of life replete with art and literature. The author is of the view that आपने author के third person perspective से लिखना है. The author is of the view that a system with such incredible power of survival is never without inherent merits. ठीक है? उसके बाद, why does the author call Confucian system a purely ethical system and not a religion? क्यों? क्योंकि a religious जो system होता है, it is overshadowed with supernatural or with mystical beliefs. ठीक है? तो because it does not comprise the defining features of organized religion, it does not associate itself with any mythological or supernatural beliefs and rather focuses only on the ethical aspects. ठीक हो गया? और फिर आपका पांचवा सवाल कि आप agree करते हैं या disagree करते हैं with his ideal of a gentleman. So this was your comprehension. When you read the questions, आप देखते हो कि keywords हैं जो कि आपको ढूंढने पड़ते हैं in the particular passage. So then you notice that it's not a very hard comprehension. You notice that it's not a very difficult thing.
to look for the answers in the passage and then convert them into your own words. You just have to do it. आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, गौर से पढ़े पैसेज को, समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद सारे सवाल पढ़ें और उसके बाद उसके कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करें. एंड देन यूल रियलाइज कि आंसर्स वहीं पे दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अल्फाज में लिखना होता है. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. थैंक यू सो मच.